Hello children, I am Monika Gupta from ME International School. Today we are going to study your chapter number 3 in computer, which is more on Windows XP. So let's start. Okay, you know that a computer works when both hardware and software work together. Computer तभी work करता है जब hardware and software togetherly work करते हैं. The software controls the overall activities of the computer parts, which are the hardware. The software controls the overall activities of the computer parts, which are the hardware. For the computer to function properly, the most important software required is the operating system software. कंप्यूटर प्रॉपर फंक्शन करे इसलिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन सा रिक्वायर्ड होता है इज द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. You have studied about it in the previous class. Here after a small recap you will learn about working with Windows XP. Operating system, there are many different operating systems. Some of the popular operating systems are MS Windows, Linux, Unix, Mac OS. The operating system कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए we need a strongest सॉफ्टवेयर जिसलिए हमें ताकि कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट हो सके. Some of the popular operating systems are MS Windows, Linux, Unix and Mac OS. Microsoft Windows is the most common operating system being used today worldwide. Microsoft Windows is the most common operating system. It is a graphical user interface GUI based operating system because there are graphics used to communicate with the computer. You can perform different actions by clicking. That is why it is user friendly software. You can perform different actions by clicking. That's why it is user friendly software. There are many versions of Windows such as Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, etc. There are many versions of the Windows to operate your computer. The latest version is Microsoft Windows 8. Working with Windows XP, starting Windows, when you switch on the system, when you turn on your computer, when you switch on the system, a welcome message of the Windows appear. A welcome message of the Windows appear. Window पर लिखा आता है type, which message क्या बोलता है वो welcome. After this welcome message, Windows screen appears. After that welcome message, Windows screen appears. This screen is known as desktop. Desktop क्या होता है? When you switch on the computer, a welcome message appears. After this welcome message, Windows screen appears and this screen is known as desktop. Windows desktop. After the welcome screen, another picture with many graphics on it appears. This screen you see is called the Windows desktop. जब welcome screen, after the welcome screen, a picture with many graphics appear on it. This screen you see is called Windows desktop. यही क्या होता है? Windows desktop. On the Windows desktop, there are three important things होती है, which is first is wallpaper, the beautiful and colorful picture on the screen which we call wallpaper. Icons, these all are icons, and the task bar at the bottom end. You have learnt about the icons and task bar in the previous class. Now wallpaper. Wallpaper is the background picture that displays on your desktop. This can be changed. Wallpaper क्या होता है? Beautiful and colorful picture on a background. Background picture होती है तो आपके कहाँ डिस्प्ले करती है? डेस्कटॉप पे. It can also be changed. आप different background, different display, different wallpapers change कर सकते हैं. Changing the wallpaper. To change the wallpaper, the steps are following steps. अगर आपको wallpaper change करना है डेस्कटॉप का, then there are following steps. First, right click at any empty area on Windows desktop. क्या करना होता है? empty area, किसी आइकन पे नहीं, empty area पे आपको right click करना है. A menu appears, एक menu appear होगा. Click on the properties. You have to click on the properties. A new window called display properties appear. जब आप properties पे click करेंगे तो क्या होगा? New window appear होगा, which called display properties. Click the desktop tab in the display properties window. आपको क्या करना होगा? You have to click the desktop tab in the display properties window. Now fourth, click any picture from the background list. You can also see the preview of the pictures on the screen. You have to now select the picture from the background list. आपको क्या करना होगा? Select करनी होगी pictures को from the background list. You can also see the preview of the picture on the screen. आप screen पे क्या कर सकते हो? उस picture को देख भी सकते हो कि कैसा लगेगा before finalizing. Click apply button. You have to click on apply button, then click the OK button. The wallpaper of your computer changes according to selected option. जो भी आपने wallpaper change किया है, आपने select किया है, वो क्या होगा? वो change हो जाएगा, वो आपकी desktop पे appear करेगा. Changing the screensaver. A screensaver starts when your computer is left idle for some time. Screensaver starts
व्हेन योर कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडल, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर में, व्हेन यू आर डूइंग नथिंग इन योर कंप्यूटर, तो स्क्रीन सेवर स्टार्ट होता है. You notice some moving pictures or graphics appearing on the screen when you are doing nothing on the computer. You notice some moving pictures, कुछ pictures move कर रही होती है, कुछ graphics move कर रहे होते हैं, appear on the screen. When you change the position of the mouse or press any key on the keyboard, जब ये graphics और screen saver चल रहा होता है, when you change the position of the mouse, आप अपने mouse को move करेंगे और you press any key on the keyboard, the desktop appears once again on the screen. Desktop again आपको screen पे नजर आता है. The moving graphics is known as screen saver. The moving graphics or moving pictures is known as screen saver. So how to change a screen saver? Here following step. Right click at any empty area on Windows desktop. A menu appears. क्या करना होता है? Right click on the empty area of the desktop. Click the properties and a menu appears and click the properties. The display properties windows appears. When you change the, जब आपने wallpaper change किया था, same ये second step करी थी, click the properties, the display properties window appears. Now click the screen saver tab in the display properties window. Now you have to click the screen saver tab. Screen saver tab पे आपको click करना है, which present on the display properties window. Select any screen saver from the screen saver drop down list box. You have to select any screen saver. कहाँ से? From the screen saver drop down list box. You can see the preview of the selected screen saver by clicking on the preview button. Preview button पे आप क्लिक करने से देख सकते हैं कि आपको आपकी डिस्प्ले आपके डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा बाद में. Set the number of minutes in the wait box. This is the idle time of computer after which the screen saver starts. Number of minutes in the wait box. आपका कंप्यूटर पे आप कुछ वर्क नहीं कर रहे तो you have to set the timing. आपने टाइमिंग सेट कर दी after 5 minutes or 6 minutes, तो उसके 5 और 6 मिनट बाद if you are not doing anything on a computer, screen saver starts. Screen saver क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा. ग्राफिक्स मूव हो जाएंगे, मूविंग पिक्चर्स और मूविंग ग्राफिक्स स्टार्ट हो जाएंगे. Then click the apply button and finally click the OK button. When you click the OK button, तो वो screen saver क्या होगा? सेव हो जाएगा आपके. Icons. These are small graphics or pictures with names such as my computer, my documents, recycle bin. When you double click any icon, it opens in a new window. Icons basically represent a file or a folder. Icons क्या होते हैं? डेस्कटॉप पे भी काफ़ी सारे नेम्स के आइकन्स होते हैं, ऐसे ही स्मॉल ग्राफिक्स होते हैं, छोटे से ग्राफिक्स होते हैं, ये पिक्चर्स होते हैं विद नेम्स ऑन इट. यू मस्ट हैव सीन काफ़ी सारे ऐसे नेम होते हैं आइकन्स के. माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेसेस, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर. यू कैन ओपन इट, you can open the graphics, so you can open the icons by double click any icon, it opens in a new window. It basically represents a file or a folder. Taskbar, this is a long rectangular box present at the bottom of the desktop. Taskbar क्या होता है? Long rectangular box होता है which is present at the bottom of the desktop. Taskbar has a start button, clock, etc. Taskbar में क्या होता है? Start button होते हैं, clock होते हैं, quick bar होता है. If there is a program already opened on the screen, अगर आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम ओपन है, its button also appears on the taskbar. तो उसका क्या होगा? button also appears on the taskbar. It is called the program tab. यहाँ पे कोई नहीं था, बट अगर आपके कंप्यूटर में या स्क्रीन में ऑलरेडी कोई प्रोग्राम ओपन है, its button also appear on the taskbar. It is called the program tab, which shows you or you can see on the taskbar. By simply clicking on any of the program tab, it can be maximized and opened. मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज बटन पे प्रेस करके मिनिमाइज स्क्रीन पे हमें मिनिमाइज का ऑप्शन शो होता है, हम मिनिमाइज करते हैं. मिनिमाइज करने के बाद वो कहाँ हमें शो होता है? टास्क बार में शो होता है. By clicking on the any of the program tab, you can maximize or open it. Files and folders. What is file and folders? A file is a collection of data stored on a storage device such as hard disk. Files and folders क्या होता है? A file is a collection of data stored on a storage device. File क्या होता है? Collection of data, काफ़ी सारे data का collection which you stored on a storage device. A folder is like a bag which contains a group of files and or other folders. A folder is like a bag which contain a group of files or other folders. Folders keep files organized by grouping them together. Folders keep file by organizing by grouping them together. School bag is like a folder. You have a school bag. आप उसमें काफ़ी सारी books और copies रखते हैं. Similarly, folder भी कैसा होता है? School bag की तरह, which contains a group of files. काफ़ी सारी files होती है और सब folders होते हैं. That contains the file which are your school books. This means whatever you save on the computer is saved as a file. आप कंप्यूटर में कुछ भी सेव करते हैं, वो किस फॉर्म में सेव होता है? In the form of a file. File can be saved, renamed, deleted, etc.
Here you will learn about some of the task possible with files. Folders are represented as, अगर आपको ऐसा सिंबल ऐसा साइन दिखता है स्क्रीन पे, इट मीन्स दीज आर फोल्डर्स. एंड फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड एज पर द सॉफ्टवेयर दे आर मेड इन. अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर, फाइल्स किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, जिस भी सॉफ्टवेयर में वो बनी हुई है, जिस सॉफ्टवेयर में आप उस फाइल को बनाए हैं. अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर, इस फॉर्म में भी दिख जाती है एज इन दिस फॉर्म एंड इन दिस फॉर्म ऑल्सो. Working with files and folders, just as you can rearrange the contents of your bag by taking out books and adding some more books. Similarly, the contents of a folder can also be rearranged. Folder का content भी rearranged हो जाता है. Folders basically ensure better organization of files. Folders किस लिए होते हैं, ताकि आप files को properly organize करके रख सकें. Different types of folders are made so that various types of files can be stored in an organized manner in them. काफ़ी सारे फोल्डर्स बना देते हैं हम कंप्यूटर में, बिकॉज काफ़ी स्टोरेज होता है. क्यों बनाते हैं, ताकि फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, प्रॉपरली फाइल स्टोर रहे इन अ कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक 2 फोल्डर्स, अ टेक्स्ट फोल्डर एंड अ ड्राइंग फोल्डर. हमने 2 फोल्डर्स बनाए कंप्यूटर में, अ टेक्स्ट फोल्डर एंड अ ड्राइंग फोल्डर, टू स्टोर ऑल योर टेक्स्ट फाइल एंड ड्राइंग फाइल. टेक्स्ट फोल्डर में आपने क्या रखी है, अपनी सारी टेक्स्ट फाइल, एंड ड्राइंग फोल्डर में योर ड्राइंग फाइल्स. The contents of a folder can be viewed in My Documents window. ये फाइल्स आपको कहाँ दिखती है, My Documents window. ओपनिंग है My Documents. अब My Documents को कैसे ओपन करते हैं? To open My Documents, simply double click on its icon on the desktop and a similar screen will disappear. You only have to click on the My Documents with the help of a mouse. You have to double click on My Documents with the help of a mouse and screen will appear. Now, various components of a window. Whenever the icon of a file or folder is double clicked on the desktop, it opens on the screen in a window. जब भी आप किसी भी फाइल और फोल्डर के आइकन को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, हम क्या कैसे ओपन होता है, बाय डबल क्लिकिंग ऑन दैट आइकन. It opens on the screen in a window. Let's see the various components of a window. विंडो में कितने components होते हैं, मेन्यू बार, टाइटल बार, बटन्स, द टूल बार एंड द स्टेटस बार. कितने होते हैं, मेन्यू बार, टाइटल बार, buttons, the toolbar and the status bar. Title bar, the bar at the top of the window that tells you the program you are working on along with the name of the file is called title bar. टाइटल बार कहाँ होता है, एट द टॉप ऑफ द विंडो. एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट टेल्स यू द प्रोग्राम, आप कौन से किस प्रोग्राम या किस फोल्डर में वर्क कर रहे हैं उसका नेम मेंशन होता है, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द फाइल. कौन सी फाइल आपने ओपन करी है उसका नेम कहाँ पे होता है, टाइटल बार में. इट्स कॉल्ड द टाइटल बार. लाइक इफ अगर आपने माई डॉक्यूमेंट्स ओपन किया तो टाइटल बार में क्या नेम शो होगा आपको, माई डॉक्यूमेंट्स. The status bar, the bar at the bottom of the screen, top of the screen title bar and bottom of the screen status bar. At the bottom of the screen gives you information regarding the file, like whether the caps lock key is on or off or which line you are on. Bar at the button of the bottom of the screen. Status bar कहाँ होता है, स्क्रीन के बॉटम पे. क्या इन्फॉर्मेशन देता है आपको, रिगार्डिंग द फाइल, whether the caps lock button is on or off. caps lock button क्या है, on है या off है, और which line you are on, आप किस लाइन पर हैं, ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है on the status bar. The menu bar which contains file, edit, view, favorites, tools, help, which is known as menu bar. The bar below the title bar, just below the title bar, is known as menu bar, gives you the various options that can be used in the program. प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन, किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर में आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कहाँ होता है वो मेन्यू बार में. टूल बार, द बार बिलो द मेन्यू बार. टाइटल बार, देन मेन्यू बार एंड द टूल बार. द बार बिलो द मेन्यू बार दैट हैज़ द शॉर्टकट बटन्स ऑफ द मेन्यूज. शॉर्टकट बटन्स होते हैं सब मेन्यू के, आपको क्लिक नहीं करना पड़ता, ना आपको टाइप करना होता है. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द शॉर्टकट पिक्चर. द बटन्स ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द विंडो. विंडो की टॉप राइट साइड में क्या होते हैं, बटन्स होते हैं. आर यूज टू चेंज द साइज ऑफ द विंडो. यूज टू चेंज द साइज ऑफ द विंडो. The different types of buttons that are seen on the right corner of the title bar. Here are 3 buttons. 3 buttons होते हैं आपके टॉप राइट साइड पे. वो क्या यूज होता है इन बटन्स का. The maximize button is used to enlarge the window to maximum size. In the middle there is a maximize button. Maximize button का यूज क्या होता है, it is used to enlarge the window. विंडो को enlarge करने के लिए to its maximum size. क्लोज बटन, द क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज द एक्टिव ओपन विंडो. आप किसी भी विंडो पे ओपन है, आपने किसी भी फाइल को ओपन कर रखा है बट यू वांट टू क्लोज इट, तो हम कौन सा बटन यूज करते हैं, द क्लोज बटन. थर्ड, द रीस्टोर बटन इज यूज टू चेंज द विंडो टू इट्स ओरिजिनल साइज. रीस्टोर बटन किस लिए, विंडो की ओरिजिनल साइज पे जाने के लिए.
and the minimize button is used to reduce the window to a small on the taskbar. Minimize button किस लिए होता है? To reduce the window to a small bar on the taskbar. Creating files or folders on the desktop. Now how do you create the file or folder on a desktop? A file or folder can be easily created on the desktop by using the following step. You have to follow some steps to create a file or a folder. Right click the mouse button on the desktop. You have to just right click on the mouse on the desktop. A shortcut menu will appear when you click the right button of the mouse. Right click the mouse button on the desktop. A shortcut menu will appear. Select the new option. जब आप right click करेंगे किसी भी empty screen, empty site पे आपको right click करना है. Then a shortcut menu will appear. Now click the new option. Click on the type of file that you want to create. The icon for a file will appear on the desktop. Click on the type of file you want to create. आपको किस तरह की file create करनी है? You have to click the icon for a file will appear on the desktop. Then the icon for a file will disappear. क्या हो जाएगा? वो file prepare हो जाएगी, वो file appear हो जाएगी आपके desktop पे. Type the name of the file at the cursor position and press the enter key or double click on it to open it and work in it. You can also change the name of that file. कैसे करना होगा? At the cursor position, press the enter key and double click on it to open it and work in it. जब आपकी फाइल बन गई है, एक फोल्डर क्रिएट हो गया, then you can work in that file. Working with files and folders. Once the files and folders are made, जब फाइल एंड फोल्डर बन गए हैं, आपने बना दिए, we can carry out various operations on them. Moving file or folder. A file or folders can be moved from one location to other simply by dragging its icon. You can move your file from one place to another place. How? By just simply by dragging its icon. Drag करना होता है. Select the file या folder. आपको जिस भी file या folder को move कराना है उसे select करेंगे. Drag it to the destination folder. उसको drag करेंगे. If यहाँ से आपको यहाँ लेके आना है तो उस icon को आप क्या करेंगे? Drag करेंगे from this place to that place. The file or folder will not be available at its original location. Then the file or folder कहाँ होगा? अपनी original location पे नहीं होगा. Deleting file or folders. When you create a group, आपने file create करी, now how to delete? आपको delete कैसे करनी होती है? A file or folder can also be deleted when we no longer need it. If you do not need any file or folder, you can delete it. The deleted file or folder goes into the recycle bin. कहाँ जाती है deleted? जो भी आपने file या folder delete किया, it goes into the recycle bin. The steps are, कैसे delete करते हैं? Single click and select a folder you do not need it and press the delete key. You only have to single click and select a folder. आपको क्या करना है? Single click करना है, folder को select करना है. You do not need and press the delete key. जिस folder की आपको ज़रूरत नहीं है उसे click करो, select करो and press the delete key. Delete key कहाँ होती है? Present on the keyboard. In the confirm folder delete box, click on yes to send the folder to the recycle bin. जब आप delete key पे press करेंगे, confirmation message appear होता है screen पे, which says confirm folder delete. आपसे confirmation मांगा जाता है आपको करना है या नहीं, which appears yes or no. You have to click on yes to send the folder to the recycle bin. जितना भी कंप्यूटर में deleted item होता है वो कहाँ move करता है, किस folder में move करता है? To the recycle bin. Now to permanently delete the folder, but if you want to delete the folder permanently, आपको permanently folder को delete करना है. Double click on the recycle bin and select the deleted folder. Recycle bin में open करेंगे, recycle bin को open करेंगे, वहाँ पे उस folder को select करेंगे and then delete that folder. Press the delete key, the folder will get deleted permanently. अगर आपने recycle bin से भी कोई file या folder delete करी है, then it will delete from your computer permanently. Copying files or folders to a pen drive. कंप्यूटर से फाइल पेन ड्राइव में लेना कैसे कॉपी करते हैं? We can copy file or folders to a pen drive so that we can take them from one computer to another. This can be done easily. कुछ steps होती हैं. Attach the pen drive. आप अपने CPU में pen drive को attach करें. Right click on the file icon. File icon पे क्या करना है हमें? Right click. A menu will appear. Right click करने पे एक menu appear होगा. Point to the send to option. कहाँ जाना है हमें? Send to option पे click करना है. Click on the Kingston option. The file will be copied into the pen drive. You have to click on the Kingston option. Then your file will be copied onto your pen drive or any other device you have connected with your computer. Thank you.